Yes, so Shubman, returning to the Gabba, what was the feeling when you entered the field yesterday? And how? And another question related to it: how do you think the pitch is different from the last time around? It was played in January. This time it is being played in December. So the difference in pitches and your feeling after coming to the field. Yes. Definitely very nostalgic when I came here. The whole team was coming and just walking to the stadium again after 2021 when felt very nostalgic. And the wicket I think we'll get to know once we play on it. It looks a good wicket to be honest. Shubman, of course, your second to Australia test tour. I just wanted to know what are the challenges of playing in Australia? Why is it so difficult winning matches in Australia? What are the things that go into making Australia such difficult nation to play? I think the intensity at which the games are played here, especially test matches, is one of the most difficult things. To be able to maintain that intensity throughout the course of 5 days is what makes Australia touring so difficult. And I think more than anything, it's the mental intensity and the mental fitness that is required here in Australia, especially here. Conditions are our conditions. The conditions, the conditions are definitely challenging, but I think there's a period in between. I think from 30-35 overs till the second new ball where it gets a bit easier to bat, but just that mental intensity, are you there? Because obviously the pitches are fast, and the history of Australia, they've played with fast bowlers because the wickets have been hard, bounce fast. So you have to be right there on the mental fitness and be ready and play with the same intensity at which you came at the crease in the start. Just on that, Shubman, you had starts on both the innings in Adelaide. How challenging is it to keep maintaining the intensity when there's no let up in the bowling or after the listening? I mean, what do you do to ensure that you're fresh in the mind? So I think the pink ball is slightly different from the red ball. It's a little bit harder to be able to gauge the seam and the hand of a bowler, especially when you're playing at night. And it's we are a bit more used to while playing with the red ball in the day. Uh, just the dynamics of a pink ball test, it's we don't play as much, and just playing at night, it's a little bit harder to gauge the seam position and the hand position at which the ball is released. So it's a bit more difficult to look as a batsman. Shubman, over the course of the long series, does the challenge kind of start changing? Do you start understanding what the opposition is all about a little bit more? Because you have like 4-5 matches to just play against them continuously. How does the challenge sort of progress? That's the beauty of playing a long series and playing a test series. There might be a scenario where a bowler might be getting you out 3 or 4 times in the series, and to be able to play the same bowler again in the next test match, uh, certain areas where you are a little vulnerable or where you can get out as a batsman. But I think that's the fun about playing a long series, playing a long test series. So do you think now that 2 tests are over, do you see now the teams getting into the space where they all know each other well and I think even before the start of the series, we have played against them enough. Their test side, I think, for the past 5-6 years haven't changed much apart from one or couple of changes here and there because of injury or some niggles. But we have played. They also know what are the areas that we are going to target at them, and we also know what are the areas that we are going to target at them. So I think even before coming here, there was. The both teams knew what would be the challenges coming here, and like I said, that's the fun part about being able to play a good long series, because there is more than the skill. There is a lot more mental tactics involved here. Shubman, one of the bowlers who's got you out in Adelaide, Scott Boland, one play this test. I'm not sure if I'm saying that. Just wanted to know, you played against him in the World Test Championship final and here as well in Australia. How does he compare to the other three fast bowlers in Australia? How do you see him as an equal, or do you have the other three bowlers who's being a little bit better? I mean, I think he's definitely a good bowler. Obviously, with the
with the three fast bowlers playing, I think almost for about 8 or 10 years constantly for Australia in the red ball. They have a lot more experience than him just because they've been playing for that long, and I think that's when there is a key decision being made, you always look at this key aspect: who has more experience in certain conditions, and I think in the skill wise, he's right there, but just I think the experience that those three have got is a lot more. Shubman, you spoke about Brisbane 4 years ago, but just as a batter, that was your first series, you played with a lot of freedom. But now that you've come full circle, how much more do you understand about your own batting in this format? Definitely, I feel pretty confident, playing here for the first time. I think I still have freedom, as a batsman. When you are out there, one of the challenges is can you play the game how you want to play the game, irrespective of what's happening on the other end or what's happening on the scorecard. And I think I faltered in the first innings around because of that, because what happened on the other end, I kind of took that on me. And there was a period where I didn't get to face, maybe I faced one ball in like 4 overs. And then the next ball that I faced, I kind of missed a straight ball, a fuller ball. But these are the challenges that you face while playing a test match. You might not get the strike for 3 or 4 overs. You might get the strike less, or you might face like 18 balls on the trot. Shubman, you guys heard from Rohit, the captain, sort of between the end of the test match and now in terms of debrief from what happened in Adelaide and sort of what he wants from you guys here? Definitely, I think as a team, as a batting group, we are looking to post a big total first up. This has been one of the key discussions, and uh, depending on every batsman, I think is gonna have its own game plan, and they're gonna as a team, as a batting group, especially collectively, we're not gonna try to get a big first inning score. That's what the discussion was about. Shubman would normally get the captain to speak the day before a test match in Australia. How come you're speaking, and where's Roy? How is he? Yeah, this was an optional practice session, and I think he practiced enough. Yeah. Shubman, yesterday we saw the Gukesh become a world champion in the field of chess, youngest ever to do that. Your message for him on behalf of the entire team India. Just wanna wish him congratulations from the entire the Indian cricket team to become a world champion, to become the youngest world champion is a great feat in itself. We'll take questions in Hindi now. Yeah, Vimal. शुभमन आपको पंत को और जायसवाल को न्यू पीढ़ी के बल्लेबाज के तौर पर देखा जाए, आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया में अपने अपने दौरे पे कामयाबी मिली, कितना बड़ा चैलेंज है, हुआ नहीं रहता है पुरानी जनरेशन के प्लेयर जब आते थे टैलेंट हुआ तो बड़ा हुआ था, और इस सीरीज में खासकर इस सीरीज में आपको लोगों को लगता है इस यंग जनरेशन में ज्यादा दबाव है? सर हुआ, आई थिंक पिछली 4 जो सीरीज हम खेले हम जीते हैं, तो फिर हुआ मुझे लगता नहीं किस बात का होना चाहिए। हुआ उस चीज़ का होता है, पहले अगर हम आए हैं हारे हैं तो फिर रहता है कि यार यहाँ पे हम जीते नहीं हैं, बट जितनी भी बार हम इधर आए हैं पिछली 2 बार जीते हैं, इंडिया में भी जीते हैं, तो आई थिंक उतना उस चीज़ का भी वो जो कहते हैं कि अगर बॉलर है तो बॉल देखनी चाहिए, वो चीज़ इस जनरेशन में ज़्यादा है कि उतना फ़र्क नहीं पड़ता कि बॉल कौन डाल रहा है। आप लोग के आपस में क्या बातचीत होती है, जैसे आज भी देख रहे थे आप लोग के साथ पंत के साथ, स्पेशली यहाँ मैच कंडीशंस में? बातचीत सर नॉर्मली रहती है हमारी, कोई ऐसे बैटिंग को लेकर कभी कभी अगर बैटिंग कर रहे हैं तो कि बैटिंग को लेकर बात करते हैं कि ओवर डिफेंसिव तो नहीं हो रहे या ओवर अटैकिंग तो नहीं हो रहे हैं, इस चीज़ को लेकर बात करते रहते हैं। रोहन। शुभन, अक्सर देखा जाता है प्रैक्टिस में कोचेस जो है वो खिलाड़ियों को सिखा देते हैं। आज आपने, ऋषभ ने और यशस्वी ने तीनों ने मिलकर मौसम मोटू को सिखा दिया, तो उसके पीछे क्या कारण था कि उनको गेंदबाजी इतनी देर तक कराने के लिए किस चीज़ों पर फोकस था? नहीं, उनको खुद गेंदबाजी करके स्पेशली ऐसे विकेटों पे बहुत मज़ा आता है, और वो हमको छेड़ते भी रहते हैं कि मैं अपनी जवानी में ऐसे कर देता था, ऐसे कर देता था। तो फिर जब हम खेलते हैं तो हम बोलते हैं कि अब विकेट अच्छे हैं बॉल डालने के लिए, कि थोड़ा हमको बॉल डालो, दिखाओ कि कैसे डालते थे। शुभन, आप दोनों मैचेस में दोनों पारियों में आपने जिस तरीके से बैटिंग की और प्राइम मिनिस्टर्स लेवल वाले गेम में भी बैटिंग की आपने, मतलब देखकर लग रहा था आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। किस मेंटल स्पेस में आप इस समय पर, अगर थोड़ा सा बता सके, बिकॉज आप मतलब इंडियन कंपैरिजन नहीं है पर आप बेस्ट लग रहे हैं क्रीज में अभी तक, पर वो बड़ा स्कोर नहीं आ पा रहे, तो आप
थोड़ा सा बता पाएंगे कि आर यू फीलिंग कंफर्टेबल, कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो परेशान कर रही है, सडनली विकेट चला जा रहा है, तो क्या आपको भी ऐसा ही लग रहा है कि आप हाँ जी, ऐसे ही लग रहा है कि जब तक मैं बैटिंग कर रहा था मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। आई थिंक जैसे फर्स्ट इनिंग में जो जैसा मैंने बोला मेरे साथ हुआ कि जो दूसरे एंड पे चीज़ें हुई उसकी वजह से मैं थोड़ा अपने शेल में चला गया और मैंने सीधी बॉल मिस कर दी। और सेकंड इनिंग में थोड़ी सबको डिफिकल्टी आ रही थी, थोड़ा बॉल देखने में, बॉल की सीम पोजीशन देखने में। जनरली एज अ बैट्समैन आप ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होते हैं जब आपको बॉल का हाथ दिखता है, आपको उसकी सीम दिखती है, उस हिसाब से आप प्रोडिक्ट करते हैं कि बॉल किस तरफ जा सकता है। अगर वो आपको नहीं दिख रहा है कि किस तरफ बॉल जा सकता है तो आप उसके लिए रेडी नहीं रहते हो। तो आई थिंक जो दूसरी इनिंग में जिस तरीके से मैं आउट हुआ, मुझे उनके हाथ से बॉल नहीं दिख रही थी विद लाइट और पिंक बॉल की वजह से। बट जितना भी टाइम मैंने क्रीज पे बिताया मुझे बहुत मज़ा आ रहा था बैटिंग करते हुए, और काफ़ी मज़े कर रहा था मैं क्रीज पे। शुभन, एडिलेड में जो हो गया वो हो गया, अभी टीम का मूड कैसा है, मोराल कैसे हाई रखा है? मूड बहुत अच्छा है टीम का। हमारा कल ही टीम डिनर था, बहुत वहाँ पे हमने फन किया टीम डिनर में। और आई थिंक जब ये चीज़ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडिलेड वाला टेस्ट मैच हमारा अच्छा नहीं गया, बट स्टिल द सीरीज इज वन ऑल। इट्स यहाँ से 3 मैच की सीरीज़ है हमारे लिए, हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि 3 मैच की सीरीज़ है। और अगर ये वाला मैच हम जीतते हैं फिर मेलबर्न और सिडनी में मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास अपर एंड रहेगा वहाँ पे। शुभमन आज बैट कमेंट्स में बोला कि शॉर्ट बॉल का इस्तेमाल करेंगे इंडियन बैटर्स के अगेंस्ट जो उन्हें सफलता मिली एडिलेड में, तो उसके ऊपर कुछ काम कर रहे हैं एज अ बैटिंग यूनिट? सर शॉर्ट बॉल पे सफलता आई थिंक टेल एंडर को छोड़ के मुझे लगता है कि एक ही बैट्समैन आउट हुआ है शॉर्ट बॉल पे, तो मुझे पता नहीं कौन सी सफलता की वो बात कर रहे हैं। फाइनल वन नाउ सर, ये सीनियर मेंबर हो आप, क्या आकाशदीप खेलेंगे अर्शद रावल के? व्हाट इज द प्लान, क्या प्लान है सर? ये तो आई थिंक कल ही पता लगेगा सर आपको। Thank you. थैंक यू।